able to maneuver his opponent from one side of the court to the other effortlessly without breaking too much of a sweat. Amazing smashing return, taking him to just 2 points from a victory. That is once again out, and the game is almost coming to its conclusion. Match point out here for Kartikeya Gulshan. And with that point, Kartikeya Gulshan Kumar from Delhi, the third seeded player, wins his game against Karan Davsakar from Goa 21-8, 21-7. Proper victory, flawless victory without breaking too much of a sweat, without breaking even a set. A fist pump there from Kartikeya to his coaching staff, and pretty sure he'll be very happy with that performance of his. And we're going to be having a conversation with Kartikeya in a short while, who put on a fabulous performance for us on center court. He is going to be in conversation with Sham Gaonkar, winner of this game in the men's singles round of 16 qualifier. And we're going to have a conversation with Kartikeya Gulshan Kumar from Delhi, the third seeded player out here in this tournament, in conversation with Sham Gaonkar. नमस्कार। फिलहाल श्यामा प्रसाद स्टेडियम से हम बात कर रहे हैं। अभी जो आपने मैच देखे, बहुत ही बढ़िया मैच था दिल्ली वर्सेस गोवा, और बहुत ही खेल भावना से खेला हुआ। और जब इंटरनेशनल खिलाड़ी की बात आती है तो खेल की क्या कहना। हमारे साथ फिलहाल दिल्ली से जो विनर्स है गुलशन, सो हमारे कार्तिकेयन है। सो बहुत बहुत आपको शुक्रिया और बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेसन। कैसा लगता है आपको? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इतने बड़े इंटरनेशनल लाइक एरिना में खेल के बहुत अच्छा लगा एंड वेरी नाइसली डन। सो आई ऑल्सो प्लेड वेल एंड kudos to my opponent also for giving me a good fight. बेसिकली गोवा में आते ही गोवा का माहौल आपका ज़रूर पसंद आएगा, और गोवा का माहौल जब पसंद आता है, ये स्टेडियम इतना अच्छा सा बहारदार स्टेडियम है। सो गोवा के खिलाड़ी के अगेंस्ट खेलना कितना टफ पहले आप सोच रहे थे? सर इट वाज मतलब क्वाइट टफ इन द बिगनिंग। मेरे को उससे पहले अनुरा, मेरे से मैच से पहले अनुरा ने भी काफ़ी अच्छा खेला। सो जब मैं कोर्ट में आया तो गोवन सपोर्टर्स वर सपोर्टिंग देयर लोकल प्लेयर। सो उसके लिए आई हैड टू बी वेरी गुड एंड बी ऑलवेज ऑन माई टोज। जब तक जहाँ ऑडियंस की बात आती है तो गोवा का जो हमारा लोकल प्लेयर था धावस्कर, उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा था।
और कोंकणी में अगर हम बात करेंगे तो देव बरे करूँ, ऐसा हम बोलेंगे। हम हमारे श्याम जी वहाँ पे बात कर रहे थे जो अभी के विनर 16वें दौर का जो अभी यहाँ पे खेल हुआ है करण और कार्तिकेय के बीच में, तो कार्तिकेय के बारे में हमने जानकारी लेने की कोशिश की। Of course, we're going to be having action resuming on center court very soon out here. We've got the games of the round of 16 between Aditya Rao of Gujarat and Malvika Bansod from Maharashtra. Malvika Bansod from Maharashtra is the second seeded player out here, second ranked seeded player out here in this tournament. She's going to be taking on Aditya Rao from Gujarat. Both sets of players making their way on to the court right now. And joined in the commentary box, I've got Dilip with me, who's keeping me company out here on this fantastic Sunday afternoon of sporting action, coming to you live, of course, from the Doordarshan network. You can also catch all the action on our YouTube channel, of course, to make sure you do not miss any of the games. We've got 43 different sports happening out here with more than 10,000 athletes at the 37th National Games. One nation, one spirit taking place out here. You've got the coin toss between the two players and the officials. And we have the game which will commence after a bit of a warm-up with both players. As you can see, Malvika Bansod from Maharashtra, the second seeded player out here, taking on Aditya Rao from Gujarat. जो एक वन साइडेड मैच हमने इससे पहले वाली देखी, उससे मेरे ख्याल से हमको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से अपोनेंट ने भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम जवाब दें। और जो अभी यहाँ पे हम खेल देखने वाले हैं, अदिति राव गुजरात से और मालविका बंसोड जो सेकंड सीडेड है इस टूर्नामेंट के लिए, और अपेक्षा करेंगे कि जिस तरह का गेम हमने अनुरा और आकर्षी के बीच में देखा, उसी तरह का गेम यहाँ पे भी हो जाए। आप एकदम ऑन द टोर है कि हर एक पॉइंट्स को अर्जित करने के लिए रहते हैं। उसी तरह से जो भी प्रेक्षक यहाँ पे बैठे हुए, दर्शक यहाँ पे बैठे हुए, वो भी ऑन द टोज रहते हैं। जब भी एक एक पॉइंट जब आप एक दूसरे के साथ मिल के या जो एक लेवल की गेम हो जाती है, तब तो अभी थोड़ा सा वार्म अप यहाँ पे चल रहा है, और उस वार्म अप के बाद एक्चुअल गेम शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हो अदिति राव और मालविका बंसोड। Yes, folks, Malvika Bansod from Maharashtra, the second ranked player at this tournament, and she ranks 50th in the world rankings. So, yes, we've got lots of quality talent on display out here. She ended up playing at the Arctic Open in 2023 earlier this year. She went out in the round of 32 event. She played a fantastic game. She also was taking part in the Victor Hong Kong Open in 2023, and she lost that game as well. But out here, she is one of the top seeded players from hailing from Nagpur in Maharashtra. Malvika Bansod taking on Aditya Rao from Gujarat. गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी है अदिति राव, और उनकी एक खासियत अगर हमको देखनी है तो वो अपने आप को बहुत ही कूल काम रख के गेम के ऊपर नज़र रखी रहती है। पर अदिति बंसोड जो है, माफ़ कीजिए, मालविका बंसोड जो है, वो भी अपना खेल अलग तरीके से खेलना चाहती है। तो अब यहाँ पे खेल शुरू होते हुए सर्विस जो है वो है अदिति राव के पास।
पहला अंक अर्जित किया हुआ है मालविका बंसोड़ ने महाराष्ट्र से। Malvika Bansod taking an early lead in this game, winning the first points of the match against her opponent Aditya Rao from Gujarat. This is, of course, the game happening on centre court. First early morning session of games in the round of 16 taking place today. Should have a few more games in the evening half, and we've got 2 more days of high intensity badminton. Twenty-fourth last day. Showbiz put 24th, no? That was the schedule which was sent on in Savio's office. No, यांचे official schedule, not आमचे schedule. Official schedule which has come with the printouts which came. ना त्यांचे official printout ते आता नो, पण आता मध्ये त्यांचे काल कोय change केलं. बंसोड़ यहाँ पे अंक अर्जित करते हुए 2-1 अभी स्कोर। Two from Aditya Rao coming back into this game against her illustrious opponent Malvika Bansod, who has won international tournaments as a young player, just 22 years old, and she's already ranked 50th in the world rankings. Extremely agile and has a very good game, but Aditya Rao isn't being phased by her opponent today, is giving as good as she gets and leads as she serves 3-2. Not completely precise with her shooting there, giving a 2-point lead to Aditya Rao. Five-two with the girl from Gujarat leading and has the serve as well. And after that lengthy rally, Malvika showing her mettle, keeping her cool and winning that point.
22 साल की बंसोड़ यहाँ पे उचित जवाब देते हुए अरिता राव को 5-5 की बराबरी पर अब ये खेल आ चुका है। And of course, the scores now: Malvika Bansod leading by 6-5 after trailing in this first set. Now leading her opponent from Gujarat, and looks to be in more control of the game. Early on in the game, players have been experiencing a little bit of drift, uh, which is something that they need to get accustomed to. And many of these players, having just arrived at the stadium, needing to ensure that they are able to understand the playing atmosphere out here. Yesterday, a couple of the players were talking to us about how they need to adjust to the air conditioning of the place. The drift which comes into play is crucial for them. जिस खेल की उम्मीद हमने की थी उस तरह का खेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अदिता राव ने यहाँ पे अंक अर्जित किया हुआ है 7-6। दोनों खिलाड़ियों के बीच में जो क्वालिटी दिख रही है, खेल की क्वालिटी दिख रही है, वो यही दर्शाती है कि ये खेल लंबा चलने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम ये होने वाला है। एक तरफ एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ टैलेंट है। टैलेंट और एक्सपीरियंस का जलवा यहाँ पे दिख रहा है और जो टैलेंट है वो अरिता राव यहाँ पे दिखाती हुई अब यहाँ पे फिर से एक बार अंक अर्जित किया है अदिता राव ने। गुजरात से है और मालविका बंसोड़ महाराष्ट्र से। Officials say that is out. Another point for Malvika Bansod. She trails to 7-9 to Aditya Rao from Gujarat, who has really given an account of herself in this game. Unfortunately, in that point, not going the way of Aditya Rao. Her lead now down to just a solitary point as Aditi Malvika Bansod looks to close in the gap and take the lead in this match. दस अंक अर्जित की है अदिता राव ने यहाँ पे और गलती करने के लिए मजबूर किया मालविका को। अदिता राव 11 अंक के साथ आगे बढ़ते हुए 3 अंकों की बढ़त यहाँ पे मालविका और अदिता के बीच में। मालविका की अगर बात हम करें तो आज तक उन्होंने मेरे ख्याल से मालदीव्स और नेपाल इंटरनेशनल जो हो चुके हैं, ये टाइटल्स उनके नाम हो चुके हैं और जूनियर और सीनियर कैटेगरीज में उन्होंने गोल्ड मेडल भी मिला है उनको। उनकी जो हाईएस्ट रैंकिंग रही है वो 28, अभी करंट रैंकिंग उनकी है वो है 42 और अभी तक उन्होंने 76 गेम्स जो है अपने नाम किए हुए हैं। और नागपुर की रहने वाली ये खिलाड़ी जो है 22 साल की खिलाड़ी अभी कुछ पीछे चल रही है, पर डेफिनेटली जो अनुभव उनके पास है, जिस तरह का खेल उनका है, उस खेल और उस अनुभव के साथ ये जो गैप है 3 अंकों का वो ज़रूर वो कम करेगी और अभी अदिता राव सर्व करने के लिए तैयार।
बहुत बढ़िया रिले और बहुत अच्छा यहाँ पे गेम दिखाई दिया, पर टैलेंट के बलबूते अपना जो अंक है अपने नाम पे करते हुए अरिता राव गुजरात से और मालविका बंसोड़। और आप ये जो खेल देख रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से, हम ये सीधा प्रसारण हो रहा है और आप यूट्यूब पे भी इस खेल का मज़ा ले सकते हो। दूरदर्शन के माध्यम से ये खेल आप तक पहुंच रहा है। अंक अर्जित किया मालविका बंसोड़ ने। And of course, Malvika Bansod, they're getting another point. And in this game, it's been a close contest. Aditya Rao has been using her height and her reach to try and overcome the technical ability of Malvika. And she's giving as good as she gets, winning another point as Malvika not happy with that decision, gesturing to the umpire that should have been out. But the call stands as the score reads 13-10 with Aditya Rao to serve. फिर से एक बार अरिता राव यहाँ पे अंक अर्जित करते हुए। अरिता राव अपना गेम जो है वो आगे बढ़ाते हुए 15 पॉइंट्स अभी उनके हो चुके हैं। 5 अंकों की बढ़त यहाँ पे अरिता के पास। फिर भी जो अनुभव मालविका के पास है, वो उस अनुभव को अगर हम देखें, उस अनुभव को अगर हम जांचने की कोशिश करें, तो वो अनुभव यही बताता है कि वो पीछे से आगे आने में बहुत माहिर है। Excellent there. 16-10. Aditya Rao now leads. She's extremely unfazed and is really keeping her cool in this match, not letting her opponent rush her into any mistakes. 16-10, a lead of 6 points against the higher ranked opponent. Aditya Rao is really showing herself and her skills out here. 16-10 is what she leads and serves. एक मेंटल प्रेशर यहाँ पे बनाया हुआ है मालविका के ऊपर अदिता राव ने, और वो प्रेशर यहाँ पे मालविका पे दिखाई दे रहा है। और जो गलतियाँ मालविका से हो रही है, उस गलतियों का खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। और अदिता राव उसी गलतियों की वजह से, मालविका की गलतियों की वजह से अदिता राव 17, मालविका बंसोड़ 10। फिर एक बार वही गलती, वहीं पे निशाना अच्छी तरह से साधा हुआ है अदिता राव ने। As you can see, Dilip, Aditi is using her right-handed advantage against Malvika, because you see Malvika is left-handed and she is doing the same thing over and over again, ensuring that Malvika is unable to reach on her weaker side, as the placement is very precise from Aditya. लेफ्ट एंड राइट हैंड के इस कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें, तो जिस तरह से अभी अलरॉय ने बताया कि उस वीक पॉइंट के ऊपर अच्छी तरह से उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है। Once again, Aditya trying to use her height advantage along with the weak spot of Malvika's left-handed side of the court.
Usually it's tricky to play left-handed players, but this time Aditya has her opponent figured out and is just a couple of points from winning the first set out here. बहुत बढ़िया कमबैक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मालविका का 13 अंक अर्जित किया है, फिर भी 6 अंकों की दूरी है वो भरनी है मालविका को, और उस दूरी को भरने के लिए फिर से तैयार मालविका। एक ही जगह पे खेलने के लिए मजबूर किया यहाँ पे मालविका ने अरिता को, और उसका रिजल्ट जो है वो एक अंक के साथ मालविका के पास दूरी अभी घटती जा रही है। 5 अंकों की बढ़त अरिता के पास। And Aditya Rao is now on set point. Malvika has 6 points to save this set if she has to try and mount any form of comeback. It's been a fantastic game of badminton out here on court number 1. The girl from Gujarat has been excellent in her performance, and as we can see, Malvika saving a set point there, but she still needs 5 more to go to draw level, and that is a tall ask, as Aditya Rao has been playing really well. So it's going to be a tough task to win 5 points on the trot against the Gujarat based girl. थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा लक्ष्य मालविका के लिए। And with that, we have the first set, which goes to Aditya Rao from Gujarat, who has prevailed over her opponent, who is the highly ranked Malvika Bansod from Maharashtra, winning the first set 21-15. Dilip, are we going to see an upset on the cards today? It looks like that is happening unless Malvika can get her act together in the second set. एलरॉय, जो अभी तक का खेल हमने देखा है, जितने 3 खेल हो चुके हैं इसी एक कोर्ट नंबर 1 पे, तो इस कोर्ट के ऊपर जो जितने सारे खेल हो चुके हैं वहाँ पे हमने सिर्फ जो दूसरी जो गेम हुई वहीं पे हमने सिर्फ 1 साइडेड मैच देखी। पर इससे पहले वाला अनुराग का हुआ हो या उससे पहले वाला मिक्स डबल्स हो, दोनों टफ गेम्स हो चुके हैं, और एक्सपीरियंस और आपका टैलेंट दोनों ही बहुत ही मायने रखते हैं यहाँ पे। और उस एक्सपीरियंस और टैलेंट, अगर आज हम गुजरात और महाराष्ट्र के ये जो गेम चल रहा है उसमें अगर हम देखें तो एक जगह पे टैलेंट दिखाई दे रहा है, एक जगह पे एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है। आप इंटरनेशनली कितने स्टैंड हो और आप टैलेंटली कितने स्टैंड हो, यहाँ पे उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप देख सकते हो। Absolutely right, Dilip. It is a question of talent and experience, and experience alone will get you somewhere. You have to put in the hard work as well in each and every game that you play. And today, Aditya Rao has given a good account of herself, and she has that to show on the score sheet. जिस तरह का खेल अभी तक हमने देखा है अदिता राव और मालविका बंसोड़ के बीच में, वो खेल यही दर्शाता है कि शायद यहाँ पे अभी जो एक सेट अदिता राव ने जीता है उसी खेल को अगर वो कंटिन्यू करेगी, उसी तरह का खेल अगर वो बरकरार वो रहेगा, तो मेरे ख्याल से ये जो खेल है अदिता राव के खाते में जा सकता है। 2 मिनट के अंतराल के बाद फिर से खिलाड़ी तैयार, कोर्ट चेंज हो चुके हैं, और अभी हमारे सामने कमेंट्री बॉक्स के सामने जो है वो मालविका बंसोड़ है और अदिता राव। देखेंगे
सेकंड गेम में किस तरह से मालविका बंसोड़ बैक आंसर जिसको बोला प्रति उत्तर जो है वो किस तरह का उनका रहता है और अपने अनुभव के साथ कितना डट के खड़ी रहेगी मालविका इस सेकंड गेम में, वो हमको देखने को अभी मिलेगा। Brilliant start to the game for Aditya Rao, winning that rally quite comfortably. And once again, Aditya Rao ensuring that she goes on to win another point, really using her height to full advantage. Her reach is absolutely incredible. Malvika is trying to maneuver to the corners of the court, but she is able to return successfully whatever her opponent is throwing her way. एक तरह का मेंटल प्रेशर बना हुआ है मालविका के ऊपर, उस प्रेशर को वो हैंडल कितना कर पाएगी ये थोड़ा आने वाला समय बताएगा, पर अभी तक तो मेरे ख्याल से अदिता राव उस प्रेशर को अच्छी तरह से मालविका के ऊपर माउंट करने में सफल हो चुकी है। इसी के साथ मालविका ने अपना पहला अंक अर्जित किया है इस सेकंड गेम में, और मेरे ख्याल से किसी भी दबाव के बिना यहाँ पे मालविका को खेलना पड़ेगा। कोच के साथ उनकी बातचीत होती रही है और कुछ इंस्ट्रक्शंस के बाद यहाँ पे शटल जो है वो चेंज होने जा रहा है। फिर से एक बार मालविका तैयार सर्विस करने के लिए। दोनों खिलाड़ी अपने कोच से बार बार बातचीत करते हुए, इंस्ट्रक्शंस लेते हुए कि किस तरह से इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। मालविका तैयार। दूसरा अंक भी अर्जित किया है मालविका ने इस बार, और फिर से एक बार अनुभव जो है वो मालविका के साथ दिखाई दे रहा है। अदिता राव और मालविका के बीच में बहुत ही बढ़िया संघर्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया रैली यहाँ पे देखने को मिली, और उस रैली में जीत हो चुकी है मालविका की। ये अंक अभी जो है अभी मालविका के खाते में चला जा चुका है, और 3-3 के बराबरी पर अभी ये गेम आ चुका है। सेकंड गेम में मालविका अपना एक्सपीरियंस और अपने टैलेंट के साथ खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है। Jagdish K, Andhra Pradesh. Welcome technical officials for the match. A scream of jubilation there from Aditya Rao. Playing really well.
And of course, she should be proud of the effort that she's been putting in. She leads 4-3 in this set and is serving. And of course, the score now reads 5-3 to Aditya, who is looking in complete control, and it looks like we might be having an upset on our hands in this game on court number 1, unless Malvika Bansod can rally and come back into this game. She needs to win this game and the next if she has to win the overall match. It's not going to be easy, of course. That is out, is what the officials say. So far, this is a tightly fought contest with Malvika Bansod not letting go of the points. 5-4 with 4-5 with Malvika to serve. And another unforced error there from the second seeded player out here, which gives the service back to Aditya. फिर से एक बार यहाँ पे अंक अर्जित करती हुई आदित्य राव, फिर से एक बार वो दबाव बढ़ाने की कोशिश जो है आदित्य की शुरू हो चुकी है, और उस दबाव को झेलना पड़ेगा मालविका को, नहीं तो जो अनुभव है उस अनुभव को मेरे ख्याल से यहाँ पे काम पे लाना ही पड़ेगा, नहीं तो परेशानी में आ सकती है मालविका। फिर से एक बार आदित्य राव तैयार, इससे पहला वाला अंक अर्जित करने की वजह से सर्विस उनके पास। And that is also in. This is some serious miscalculation on the second seeded player's part. We are witnessing a really good fight from Aditya Rao from Gujarat against her opponent. She leads by 4 points and is really looking dominant in this match. फिर से एक बार गलती करने के लिए मजबूर किया यहाँ पे, और उस गलती की वजह से पॉइंट टैली में कोई इजाफा नहीं है। पांच अंक अभी मालविका के खाते में, 9 अंक आदित्य राव के खाते में। फिर भी ये 4 अंकों की जो दूरी है मालविका को भरनी पड़ेगी, नहीं तो इसी तरह का गेम अगर चलता रहा तो ये सेट और ये गेम अपने नाम कर जाएगी आदित्य राव। And there was a close contest at the net, which ensures that another point was won by Malvika. She is trading in this game by 6-9 to Aditya Rao from Gujarat. And that's out, and it was out of bounds and out of reach as well, but thankfully for Aditya Rao, she gets another point. 4-point lead against the top seeded player in this match. Second seeded player
Malvika Bansod from Maharashtra just does not seem to be on her game today. No matter what she tries to do, her opponent seems to have an answer for it, and she is going to have to try and fight it out and really dig deep if she needs to come back into this game. मेरे ख्याल से अलरॉय इन्होंने जो भी सवाल पूछा है उस सवाल का सबसे बढ़िया जवाब मेरे पास है, ये अरिता राव ने अभी तक करके दिखाया है। और इस अंक की वजह से फिर से सर्व करने के लिए तैयार अरिता राव। अरिता राव का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने 10 अंक अर्जित किए हुए हैं। 7-10 with Malvika to serve. And with that, score is now 11-7. It looks like at the mid-game break we're going to be having a very interesting team talk from both coaches to their players. The young Adda Rao getting encouragement from her coach, telling her to keep doing what she's doing, and of course providing some insight into her game skills as well. And Malvika's coach is definitely going to have to talk his player into changing her approach in this game, because what she is trying right now, Dilip, does not seem to be coming off at all. सही है अलराय, क्योंकि जो बातचीत मेरे ख्याल से अभी मालविका और उनके प्रशिक्षक के बीच में चल रही है वो वही चलती होगी कि किस तरह से जो अदिति के पास शॉट्स है उसका जवाब किस तरह से दिया जाए। इससे भी बढ़िया कि मेरे पास कौन सा शॉट है जो मैं जिस शॉट की वजह से मुझे अंक मिल सकते हैं, मुझे पॉइंट्स मिल सकते हैं और इस गेम को अपनी तरफ मोड़ सकती है। क्योंकि अब अगर ये दूरी जो है अभी जो 5 अंकों की या 4 अंकों की जो दूरी है वो अगर वो कम कर पाई तो मेरे ख्याल से मालविका फिर से इस गेम में आ सकती है। And as you can see, another successful point for Adita Rao there, yelling in excitement, and of course lots of passion as well from the player. She'll definitely be excited to be winning this game. फिर से एक बार गलती यहाँ पे मालविका की और उस गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। इसी के साथ आदित्य राव के खाते में एक और अंक और उसी अंक के साथ उनकी बढ़त जो है वो बढ़ती जा रही है। 7 अंक है मालविका के पास और आदित्य राव सर्व कर रही है 13 अंकों के साथ। फिर से एक बार बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे, स्मैश यहाँ पे देखने को मिला जिसका कोई उत्तर नहीं था मालविका के पास। उसके लिए इसी के लिए आदित्य राव का जो टैलेंट है यहाँ पे, जो उन्होंने जिस टैलेंट का प्रदर्शन यहाँ पे किया है उस टैलेंट की वजह से थोड़ा सा अनुभव जो है मालविका का कम दिखाई दे रहा है। तो टैलेंट वर्सेस एक्सपीरियंस का जो गेम है यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र की जो खिलाड़ी है दिखाते हुए हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बहुत देर के बाद एक अंक अर्जित करते हुए मालविका, और फिर भी आदित्य राव इनके ऊपर अभी भी कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, बिना दबाव के साथ अपना जो नेचुरल गेम है वो यहाँ पे दिखाते हुए मालविका के ऊपर फिर भी बहुत प्रेशर देखेंगे। इस सर्व के बाद कोई नाटकीय मोड़ आ सकता है क्या?
मालविका फिर से दबाव में दिख रही है। इस बार फिर से एक अंक अर्जित किया है अरिता राव ने और 15 अंक के साथ बढ़त बनाते हुए अरिता राव सर्व करने के लिए तैयार। नाइन 15 मालविका सर्व करते हुए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मालविका के लिए यह अंक बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर एक बार गलती करने के लिए मजबूर किया। 16 अंक अरिता राव, 9 अंक मालविका बंसोड़। अरिता राव अपने टैलेंट के बलबूते यहाँ पे पूरा जलवा बिखेर रही है अपने खेल का और कुछ ही दूर 4 अंक दूर अभी इस अपने पूरा गेम जो है अपने नाम पे करने के लिए, एक खेल अपने नाम पे करने के लिए। दस 17 अभी अंक तालिका में। फिर से गलती करने के लिए मजबूर मालविका और अरिता राव ने अंक अर्जित किया है और इसी अंक के साथ उनकी बढ़त जो है वो 8 अंक की हो चुकी है। बहुत मुश्किल लक्ष्य लग रहा है पर बोल नहीं सकते, कहीं पे भी किसी भी मोड़ पे कुछ भी हो सकता है। And wow, it looks like we really do have an upset on the cards today out here on court 1. Aditya Rao from Gujarat, just 2 points away from victory against the second seeded player from Maharashtra, Malvika Bansod. And we're definitely seeing a good, or rather a great game of badminton out here, where the underdog is prevailing. She's playing some ferocious shots, and one more shot away from victory out here for Aditya Rao from Gujarat. गुजरात के अदिता राव सिर्फ 1 अंक दूर अपने विजय लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो निकल चुकी है और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे अदिता का। एक अंक अर्जित किया है मालविका ने, फिर से 1 अंक दूर अदिता राव ये पूरा गेम अपने नाम पे करने के लिए। बारह 20 मालविका ने अंक अर्जित किया है और यहाँ पे शटल चेंज करने के लिए दोनों खिलाड़ी फिर से तैयार। मालविका सर्व करने के लिए तैयार। गलती करने के लिए मजबूर किया इस बार मालविका ने अदिता राव को और बहुत दूर तक खींचा। ये रैली बहुत अच्छी चल रही थी और इसमें अंक हासिल किया मालविका ने 13-20 13-20। अभी भी
अभी भी खेल जिंदा है, अभी भी खेल मालविका के पास। शायद अगर ये सारे अंक, बहुत 7 अंकों की जो दूरी है, बहुत मुश्किल लक्ष्य लग रहा है, फिर भी ये खेल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मालविका बंसोड़ यहाँ पे अंक तालिका जो है वो 13-20 की हमको दिखाई दे रही है। 13 अंक जो है मालविका के है और 20 अंक जो है वो अनिता राव के है। और आप ये जो सीधा प्रसारण देख रहे हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हो। नेशनल गेम्स 37 नेशनल गेम्स जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और सेलिब्रेटिंग वननेस थ्रू स्पोर्ट्स, वन नेशन वन स्पोर्ट, इस तरह की जो भावना है वो तैयार करने के लिए 37 नेशनल गेम्स गोवा में शुरू हो चुके हैं। गौय आशा तैयार, सर्व करने के लिए तैयार मालविका। अनिता राव तैयार, मालविका सर्व करने के लिए तैयार। मालविका ने अंक अर्जित किया है और फिर से सर्व करने के लिए तैयार मालविका। क्या 1-1 के बराबरी पर ये खेल आ सकता है क्या, प्रश्न मन में उठ रहा है। और यहाँ पे खेल अपने नाम कर चुकी है अनिता राव और इसी के साथ इस 16वें दौर के इस खेल में गुजरात की अनिता राव जीत चुकी है। और कुछ ही देर के बाद अनिता से मुलाकात भी हम करेंगे और हमारे एलरॉय वहाँ पे तैयार है अनिता से बात करने के लिए। जो हमने देखा 21-15 और 21-14 से 21-14, 21-15, ये जो गेम की पॉइंट टैली है, उस पॉइंट टैली से हमको पता चलता है कि अनिता राव जो है वो इस गेम की विनर हो चुकी है। और कुछ ही देर के बाद अनिता से मुलाकात करने के लिए वहाँ पे तैयार एलरॉय। महाराष्ट्र की मालविका बंसोड़, बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा थी उनसे कि कुछ अलग हमको खेल देखने को मिलेगा, पर बराबरी का खेल यहाँ पे ना बन सका और उसी के कारण मेरे ख्याल से अनिता यहाँ पे जीत चुकी है। वहाँ पे एलरॉय तैयार अनिता से बात करने के लिए। कुछ देर के बाद हम आपको सीधे एलरॉय के पास लेके जाएंगे, जो इस दौर के 16वें दौर की जो विनर है उनसे बात करने के लिए है तैयार। इस रिप्ले में आप देख सकते हो अनिता राव का कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और बहुत बढ़िया एक रैली भी हमको देखने को मिली थी, बहुत देर तक चली थी वो रैली और ये था उनका विनिंग शॉट। Please welcome the technical officials on court 1, umpire for this match, Sudhir and service judge. कुछ देर का इंतज़ार, हम कुछ ही देर में अनिता राव से बात करने वाले हैं। हमारी टीम और उनके साथ हमारे एलरॉय तैयार है। Players for
this match, Saurabh Verma, MP, and Raghu M. Karnataka. कुछ देर के बाद हम यहाँ पे और एक गेम देखने जा रहे हैं और वो रहेगी सौरभ वर्मा मध्य प्रदेश के और रघु एम कर्नाटक से। इन दोनों के बीच में कुछ ही देर के बाद खेल शुरू होने वाला है। अरिता राव से मुलाकात करने के लिए तैयार। Hello, everybody, and welcome to another exciting day out here at the 37th National Games being held in Goa. We've just witnessed an extremely thrilling game where we've seen an upset in the tournament. We've got Aditya Rao, who's joining us from Gujarat, the victorious winner against Malvika Bansod from Maharashtra, who is the second seeded player out here in this National Games tournament. Aditya, congratulations, very well played. I was watching the game as well. Congratulations, well played. How do you feel right now? Thank you so much. Well, I feel extremely tired right now because she is an excellent rally player, and it's always been tough playing with her because I've already played once before. I lost with her today, but it was a very good match, a very long match, and an exciting match. I love playing with her as well because she's a rally player. So for her playing with her, we need a lot of stamina to sustain on court. So yeah, it was great. You won in straight sets. You were in complete domination of the game. I have to ask, did you have a game plan in mind before you attempted the game, or did the game plan change as the game progressed? No, I was already planned. My coach with me, we both planned how to play according because she is like a very rally player. So I had to play very attacking game with her, and I had to be fast playing with her because if I'll play slow, then I'll be setting with same game which she is playing. So yeah, it was all planned. We decided to play an attacking game, and I wanted to be dominant from the start. So it was a straight set game. Towards the end of the game in the second set, she did win a couple of points. What is the mindset that goes through your mind? You know, how do you keep yourself calm? How do you that 1 point before the victory? Because we saw in the previous game also, there was an upset on the cards, but there was a rally from the more experienced player. How did you manage to keep your calm? Well, it was just 1 point, but as I said, she was a rally player. So there was no point in playing fast and a dominating game in last few points. Well, I played such a long game, and in the last few points, I could not just rush and finish the game. So I had to play the same game which I was playing from the start. So I decided to just play on the last 2-3 points. I did lose couple of points in the last game, but yeah, even she is a good player. She's not like just dominant. So I decided just to play a simple game in the last few points, and just decided to play rallies. That's all. Well, congratulations and all the very best. Thank you so much for talking to us, and all the best for the tournament. Right, folks, we now go back to the commentary team with Mo. थैंक यू एलरॉय। और आपने देखा कि किस तरह से गेम प्लान बना चुकी थी अरिता राव, और अरिता ने जैसे बोला कि मालविका एक रैली प्लेयर है और उनकी जो खासियत है उसी खासियत के ऊपर हावी होना, यही उनका गेम प्लान था, और उसी गेम प्लान के साथ उन्होंने ये जो जीत है वो कर चुकी है। अभी इसके बाद सौरभ वर्मा और रघु यम, मध्य प्रदेश के सौरभ वर्मा और रघु यम यहाँ पे कर्नाटक के, इनके बीच में खेल होने वाला है। कुछ यहाँ पे थोड़ी सी वार्म अप दोनों प्लेयर्स के बीच में। So we are all set for action in the men's individual category. A round of 16 match coming up between Madhya Pradesh Saurabh Verma and Karnataka's Raghu M. A bit of info on Saurabh Verma. He's an international badminton player, aged 30, from Dhar, Madhya Pradesh. His highest ranking was 28 way back in 2019.
whereas his current ranking in the BWF is 65. Saurabh Verma in white. (3-2). M. Raghu of Karnataka is in the lead now. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are reporting here from the stands of the 37th National Games Zone. And now, A good match is expected here between Saurabh Verma and M. Raghu. We have seen some fascinating contests already in this individual competition earlier today, and the best among them was between Aditya Rao of Gujarat and Malvika Bansal of Maharashtra. Aditya stunned the number 2 seed international shuttler Malvika Bansal 21-15, 21-14 just before this match began. And we are here, M. Raghu to serve 4-2 in this first game. M. Raghu is Karnataka's number 1 player, and at age 25 is ranked 289 in the world ranking for men's singles. So there you see his strength, the smash, the jump smash, made famous by former India star P. Gopi Chand, who's been chief coach in the recent times. And has molded a number of winning mentalities in Indian badminton, and largely responsible for growing profile of Indian badminton, the fastest growing sport in the country. फिलहाल 9-2 इज़ द स्कोर और बहुत ही अच्छा मैच यहाँ खेलता हुआ दिखाई दे रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बाम्बोली गोवा 37 नेशनल गेम्स के अंतर्गत बहुत ही नतीतुली खेल का प्रदर्शन देखने को मिलते हुए दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही तंदुरुस्त और बहुत ही अच्छा It's really nice to see some young children in the stands as well. Being a Sunday afternoon, some parents have brought their kids to watch the match. And so important that you never know, one might take up badminton in future, as we see that Raghu Mariswamy also did it. Raghu used to follow his father to the badminton court and used to watch his father play, and that's how Raghu developed
a liking for the sport, and here today he is number one ranked player of Karnataka and also playing internationally. But right now the action is in the national games, and we have a fascinating encounter going on the court number 1 between Raghu M of Maharashtra and Saurabh Verma of MP, another international shuttler. This is the men's singles round of 16. फिलहाल जो स्कोर है 4-11। अच्छा बॉडी लाइन स्मैश। और खेल का अगर यहाँ बात हुई तो खेल एक ऐसा प्रकार है जो हर एक को एक प्रतिभावान खिलाड़ी के रूप में देखने का हर एक दर्शक का मन करता है। और इसी आगाज़ के साथ यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्टेडियम पे A37 नेशनल गेम्स शुरू है। अच्छा स्मैश करने की कोशिश ऑन नेट। स्कोर 12-5। 12-5 इज द स्कोर एट द मोमेंट। बहुत अच्छी कोशिश थी प्लेस करने की, लेकिन एक अंक का इजाफा। 13-5 स्कोर। 13-5। बहुत अच्छी बढ़त लेते हुए बहुत अच्छा स्मैश जवाबी हमला करते हुए वर्मा। 6-13 एट द स्कोर एट द मोमेंट। बहुत ही बढ़िया खेल का नज़ारा यहाँ देखने को मिलते हुए। और छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हुए 6-13 इज द स्कोर। और MP से सौरभ वर्मा वर्सेस रघु एम फ्रॉम कर्नाटका। दिस मैच इज प्लेड बिटवीन सिंगल्स, मेल सिंगल्स, मैन सिंगल्स। सौरभ वर्मा वर्सेस रघु एम। डिफेंस और स्मैश का मिश्रण देखने को मिलते हुए यहाँ के इस श्यामा प्रसाद स्टेडियम से स्कोर फिलहाल 7-13। और अच्छा गेम का नज़ारा यहाँ दर्शक अपने मन के कैमरा से कैद करते हुए। स्कोर 7-13। वर्मा टू सर्व। Saurabh Verma gets very crucial point here that takes him up to 8, and it's a lead of 5 points still to make up for Saurabh. A 3-time national champion Saurabh Verma is looking to come up to the top level again, and here is fighting in the men's round of 16. You see Raghu M also up for the challenge here. He leads 14-9.
Nice half smash there. Cross court, and Raghu M trying to dive and retrieve, but not coming up with the goods. Saurabh Verma takes his total to 10, and Raghu M is still on 14, so 4-point gap between these two players, but that's so flimsy as the players can go on taking points consecutively once they strike a rhythm, and it seems like Saurabh Verma is now coming into his own. चार अंकों की बढ़त लेते हुए स्कोर 10-14। बहुत ही अच्छा सुपर प्लेसमेंट फ्रॉम रघु। 15-10 इज द स्कोर। 15-10 फिलहाल सर्व करने के लिए तैयार। (11-15) स्कोर मूव्स टू 11-15। बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ खेलते हुए दोनों ही खिलाड़ी एमपी और कर्नाटक से। बहुत ही क्रॉस शॉट था, लेकिन अभी स्कोर 12-15, 3 अंकों का फासला यहाँ बनाए हुए रखा है। और अगेन अवे 13-15 इज द स्कोर। सिर्फ 2 अंकों का फासला। अच्छा मैच चल रहा है यहाँ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के इस कोर्ट नंबर 1 से। प्लेस करने की चाहत लेते हुए थोड़ी सी चूक। 14-15। अब सिर्फ 1 अंक का फासला। वर्मा टू सर्व। 14-15। फिर एक बार गलती और स्कोर बराबर 15 ऑल। बहुत ही अच्छा बाउंस बैक करते हुए वर्मा 15 ऑल, 15 each। वर्मा टू सर्व। The smash lacked the direction, and when you miss the line, you don't get a point. That's what happened, and Saurabh leads 16-15. This time Raghu was very quick and targeting the body of Saurabh, gets a point and levels the scores up in the first game here, 16 all. दो अंकों की बढ़त लेते हुए वर्मा भी 18th और 16। अच्छा प्रयास था, लेकिन ऑन नेट 19-16, जस्ट 2 points अवे फ्रॉम हिज सेट विक्ट्री। 19-16। Saurabh Verma rather, lost in the semi-finals in the national championships earlier this year, and there went his chances of winning the 4th title up in smoke. A very good rally, high pressure rally here, and Saurabh Verma looked in full control of that point, on a game point now.
That's brilliant. 21-16. Clinically done. The game is Saurabh Verma's. Starts the round of 16 match against Raghu M of Karnataka on a very strong footing. दो मिनट का इंटरवल गैप, बहुत ही अच्छा गेम यहाँ देखने को मिला। दोनों ही तंदुरुस्त खिलाड़ी, सौरभ वर्मा फ्रॉम एमपी मध्य प्रदेश वर्सेस रघु एम फ्रॉम कर्नाटका। 21-16 से इस सेट मिस्टर वर्मा ने अपने नाम करवाया और देखते आगे का जो सेट है उसमें वो क्या कमाल दिखाते हैं। Sham, this player has played for many years at the top level in the national badminton circuit. Saurabh Verma has been India international shuttler as well. He has great experience, whereas M. Raghu is a youngster. He has been Karnataka's #1 player now. But as far as the experience goes and the command over situations go, you must say Saurabh Verma is definitely the favorite here. He has won the first game as well, but it will be a huge task for M. Raghu if he has to make a comeback here in the second game. फाइनली नीरज जी, यहाँ एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि जैसे कि बॉडी लाइन, अगर बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो सौरभ वर्मा जो एमपी से आते हैं, बिलोंग्स करते हैं, उस कितना कूल और बहुत अच्छे तरीके से अपना खेल का प्रदर्शन यहाँ दिखा रहे हैं। और बहुत ही नतीतुली खेल का जब प्रदर्शन दर्शक देखते हैं तो दर्शक उत्साहित होते हैं और इसी अंदाज में अपनी लीड और बढ़ाने के लिए दूसरा सेट का आगाज हो चुका है। Verma again started his बहुत अच्छा प्रयास, डिफेंसिव प्लेसमेंट, एक एक दोनों ही खिलाड़ी एक एक अंकों पे। A very good point there, showing Raghu showing his capabilities there. Very well done. Good 2 points by Raghu M, trying to make a comeback in the game here. He has to bounce back by winning maximum points in this game. एक के बाद एक 3 अंक अर्जित करते हुए रघु 3-1। There goes the error in judgment. It's such a fine eye is required to judge when you leave the shuttle alone and you expect it to drop outside the playing area, but sometimes it doesn't go your way, as Raghu found out. Wonderful defense here by M. Raghu. He was not in control of that point, and Saurabh Verma was attacking all out. But that's the beauty of the sport. If you are in right position at right time, you can retrieve any shuttle, any return. बहुत नतीतुली स्मैश यहाँ देखने को मिल रही है और इस अंक के साथ रघु 5 पॉइंट लेके खेल रहे हैं कोर्ट
एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के इस प्यारे से मैदान से। स्कोर फिलहाल 5 वर्सेस 2 और वर्मा ने पहला सेट अपने नाम ऑलरेडी करवाया है। सो दूसरे सेट के गेम फिलहाल शुरू, जिसमें रघु 5 अंकों की बढ़त लेते हुए खेल रहे अपने प्रतिद्वंदी सौरभ वर्मा जो एमपी से बिलोंग करते हैं। ज़बरदस्त मैच का आगाज़ यहाँ आज सुबह से हमें देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बैडमिंटन की बात है तो बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो देखने के लिए बहुत ही दर्शक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ आए हुए हैं और अपने पसंदीदा जो खिलाड़ी है उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। Beautifully done here by Saurabh Verma. See how he deceives M. Raghu with his controlled drop shot into a cross-court direction. And here M. Raghu sends a smash crashing into Saurabh Verma's body to get equal. He leads 6-3. It's a neck and neck battle here. The points being traded, service changing hands. Yes, the players like to attack whenever there's a chance, and why not? The whole idea is to score more points and with less rallies, and that's the way to go. Saurabh, with a wry smile on his face here, is not happy that he is making these mistakes. He knows with his experience of what it takes to play flawless badminton. Well earned point there for Saurabh Verma. He has had to fight for every point in this game. It's getting intense, and absolutely that's the way it should be, because this is the national games, the prestigious multi-sport extravaganza, and we are watching the badminton individual competition here. Lot of events lined up in this 37th edition of National Games, 43 in all, as Goa has got set and started delivering on its promise to make the National Games the best ever in the history of the games in India. अच्छा प्रयास था कर्नाटक के प्लेयर के माध्यम से, लेकिन थोड़ी सी गलती। 0.68। जहाँ तक बैडमिंटन खेल की बात करें तो एक ट्रिकी गेम इसे कहा जाता है और बहुत ट्रिकी तरीके से जब प्लेसमेंट होता है तो पॉइंट अर्जित करना डेफिनेटली पक्का है। सो इसी अंदाज के साथ खेला हुआ है मैच। 9-6 इज द स्कोर। एक के बाद एक पॉइंट अर्जित करते हुए कर्नाटक के प्लेयर रघु। 7-10 is the score. 7-10. आठ 10 2 अंकों की बढ़त लेते हुए रघु। वर्मा 8
Raghu 10. A lovely drop shot this time by Raghu M takes the total of points to 11 for him, and Saurabh Verma is on 8, having won the first game. So it's a close battle here on court number 1, and you're watching every shot, every tap, every serve being dished out on the Doordarshan network live. जी हाँ दोस्तों, साथियों, जैसे नीरज ने कहा कि दूरदर्शन के माध्यम से ये खेल का बैडमिंटन खेल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्टेडियम पे फ़िलहाल शुरू है, उसका लाइव प्रसारण लेके दूरदर्शन के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, और आशा करते हैं इस खेल का आप भी घर बैठे आनंद ले रहे हो। 19 तारीख से शुरू हुआ ये खेल अब 4 दिन से यहाँ चलता हुआ, और आज चौथा दिन, फिर एक बार वापसी। नाइस स्मैश फ्रॉम वर्मा। 9-11, 2 अंकों का फासला। 9-11 इज़ द स्कोर, और जिस तरह से, जिस अंदाज से ये मैच खेला जा रहा है, लगता है कि बहुत ही टफ होने वाला है। वैसे देखा जाए तो पहला सेट ऑलरेडी वर्मा ने अपने नाम करा दिया है, और दूसरे सेट की फ़िलहाल कोशिश जारी है दोनों ही प्लेयर अपने नाम करने की। Nicely smash from Karnataka, but away from court. 10-11, अभी जो फासला है जो सिर्फ एक अंक का रह गया है। वर्मा टू सर्व। नाइसली प्लेस देयर फ्रॉम वर्मा, और स्कोर का इक्वल होना फ़िलहाल एक संदेश देता है कि दोनों ही प्लेयर्स बहुत ही अच्छे ढंग में अच्छे प्रयास कर रहा है कि दूसरा सेट अपने नाम करा जाए। सो 11-11 इज़ द स्कोर, और एक बार शानदार प्लेसमेंट फ्रॉम वर्मा। 12-11, एक अंक की बढ़त अब वर्मा ने वापस अपने खेल में ली है। 12-11। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट फिर एक बार फ्रॉम वर्मा। 13-11, बहुत ही अच्छा खेल होता हुआ यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के इस कोर्ट नंबर 1 से। 13-11, 2-point lead to Saurabh Verma in this second game of the men's singles round of 16. The individual competitions are in progress here in the badminton event at the 37 National Games Goa 2023. The venue is Dr. Shyama Prasad Mukherjee Stadium, and it looks absolutely amazing. Judenge, Jiyenge, Jitenge is the tagline for this national games, as over 10,000 athletes are set to converge on Goa for this 43 discipline extravaganza, the biggest ever games held in India till date. अच्छा प्लेस करने की कोशिश कर्नाटक के द्वारा, लेकिन पॉइंट वर्मा के खाते में जाता हुआ। 14-11, 3 अंकों की बढ़त बनाए हुए वर्मा।
छोटी सी गलती फ्रॉम वर्मा और पॉइंट रघु के खाते में 12-14. Nice match from Karnataka, Mr. Raghu, and score moves to 13-14. बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ देखने को मिलता हुआ और इस अंक के साथ 13-14 स्कोर. पॉइंट्स की बराबरी 14-14, 14-14. अच्छा बाउंस बैक रघु ने किया हुआ. That is a sensational smash by Raghu M and is really giving Saurabh Verma a tough time in this game. Raghu M of Karnataka leads 15-14. Saurabh Verma, very experienced player from MP, and he knows what he has to do. The chair for the coach and support staff are seen to be empty, so he's on his own on the court. We all know how important it is at times to get the necessary help from the touchline assistance in the form of the coaching staff, as it's the norm here. In the meanwhile, Raghu gets set to serve 15-14. अच्छा प्रयास था कर्नाटक के प्लेयर के द्वारा, लेकिन ऑन नेट स्कोर 15 ऑल. Verma to serve. Verma from Madhya Pradesh. Slightly wider, and Raghu M gets the point. He's feeling his back a bit. Saw a little while ago the physio was out there by the court side and giving him a bit of a pain relieving spray. But the muscle seems to have not been relaxed enough yet. Raghu M is fighting on. He's leading Saurabh Verma by a point in this crucial second game. Good smash once again. Raghu is blazing. सिक्सटीन 17 इज द स्कोर एट द मोमेंट. और बहुत बढ़िया मैच चलता हुआ इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के इस कोर्ट नंबर 1 से. Verma to serve 16-17. (17 all). हर एक पॉइंट के लिए यहाँ झगड़ते हुए दोनों ही खिलाड़ी वर्मा और रघु. A well-constructed point here as the shuttlers explore every corner of the court, but in the end it was the unforced error by Raghu M that decides the point. A lot of perspiration, especially Raghu is sweating profusely, and you see the sweat dripping onto the court. The effort by Raghu is big here. Saurabh Verma has regained the lead. It's 18-17 in the second game now.
दोनों ही खिलाड़ियों द्वारा अच्छा प्रयास होते हुए अंक 18 ऑल। द स्कोर एट द मोमेंट इज 18 ऑल। बहुत ही बढ़िया खेल का नज़ारा यहाँ दर्शक उठाते हुए। फिलहाल स्कोर 18 ऑल। बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत ही अच्छा शॉट, क्रॉस स्मैश था। स्कोर 19-18। I think Raghu Am is capitalizing on the lifts which are not that great from Saurabh. Is getting them in his zone to smash and doing it really well is Raghu. Oh, this time his serve goes out of playing area. And the scores are now tied 19 all. It's anybody's game. But for Saurabh, he could win the match if he gets the next 2 points. Once again, the smash has been absolutely brilliant from Raghu M. Very, very accurate this time. Getting the necessary point. And can he get the game point here to level the scores up? 20 all. This is edge of the seat thriller, a nail biter, because it's not going one player's way for a certain. You see the service changing the ends and points going either way. Such matches are very, very unpredictable. Both look equally good in this game. Raghu has looked very, very sound with his smashing technique, and he has pushed Saurabh, but Saurabh Verma has been overall a better player of the two. Let's see if he can get back and win this match. There you go, it's 21-20 and Saurabh Verma is now on a match point. That was a nice placement actually, but away from the court, and इस अंदर से खेलते हुए वर्मा ने इस पॉइंट पे, इस साइड पे अपना नाम कब्जा कर दिया है, और उन लोगों ने इस मैच के अपने नाम करवाया है। सौरभ वर्मा फ्रॉम एमपी who won by first set by 21-16 और सेकेंड 22-20। और इसी अंदाज में खेलते हुए एक प्यारा सा खेल यहाँ दर्शक उठाते हुए। फिलहाल हमारे नीरज बात करेंगे, जो इस मैच के विनर है मिस्टर वर्मा फ्रॉम एमपी। कुछ ही पलों में ये सीधा प्रसारण आप देख सकते हो हमारे दूरदर्शन के माध्यम से, और इस मैच का आंखों देखा हाल लेके आपके यहाँ तक हम लेके आए हैं गोवा दूरदर्शन। सो फिलहाल एक अच्छे मैच की समाप्ति होते हुए, जो बहुत अच्छे ढंग से खेला गया यहाँ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पे। और इस बार नीरज बात कर रहे हैं वर्मा से। ओवर टू नीरज। Saurabh Verma, what a good performance he has put out there, and we could see what it means to him. Your cry at getting the match point said it all. How important was it to start well? Obviously a knockout format as well. Yeah, I started off really shaky, and later on I got the rhythm when my defense got going, and later on he got tired. So when he got tired, I got the advantage of that. How important is this national games competition for you personally, looking to take your level up again at the national championship? You have won the title 3 times in the past, the national championship. So how important it is for you?
Yeah, every time whenever I play national games or national championship, it is equally important each and every time because each tournament give you some kind of confidence. So it's kind of confidence booster for me for the upcoming tournaments. Have you set yourself a goal for this season and what it would be if you want to let your fans know as well? I'm not thinking much about it, but yeah, one match at a time because my previous outing was really bad and I just got recovered from cold, so I'm not expecting much at that time. But yeah, I'm giving it whatever I have. How do you find the facilities here at the SPM Stadium? Yeah, it's really nice and it's kind of the feeling here is a kind of international tournament. So all the best and good luck for the national games. And good luck and all the best to you as well, Saurabh Verma. I hope you do really well in the tournament going forward. Thank you so much. So there you go, Saurabh Verma here has played very well and won this round of 16 match in the men's singles individual competition. It's over from here right now. Back to the commentators box. थैंक यू नीरज आणि थैंक्स सौरभ वर्मा। इसी के साथ इससे पहले वाले गेम में आपने देखा कि 21-16 और 21-22 के साथ सौरभ वर्मा ने ये इससे पहले वाली गेम जो है वो जीती थी। और जो खेल का जो अनुभव है मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिया होगा, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से हम यहाँ से आपसे जुड़े हुए हैं और ये सीधा प्रसारण जिसको हम बोलते हैं वो सीधा प्रसारण यहाँ से चलता आ रहा है। और दूरदर्शन गोवा और डीडी स्पोर्ट्स दोनों के मिलाप से ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने के लिए हम कोशिश करते आ रहे हैं। आज जो खेल शुरू हुआ था, शुरू से नवनीत बोक्का और मनीषा के तेलंगाना स्टेट से, नितिन एचवी और रमैया वेंकटेश कर्नाटक से, इन दोनों के बीच में जो खेल हुआ था वो डबल्स का क्वार्टर फाइनल था। वहाँ पे हमने देखा कि नवनीत बोक्का और मनीषा के इन दोनों की जोड़ी जो थी वो यहाँ पे विनर थी। उसके बाद आकर्षि कश्यप और अनुराग प्रभुदेसाई के बीच में भी हमने बहुत बढ़िया खेल देखा, जिसमें अनुराग प्रभुदेसाई जो थी वो रिटायर्ड हो चुकी थी और उसकी वजह से उनको खेल बीच में ही छोड़ना पड़ा। और इसी में आकर्षि कश्यप जो एक इंटरनेशनल रिनोड अपनी स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने ये खेल जो था वो जीता था। इसके बाद हमने देखा कि कार्तिकेय, गुलशन कुमार और करण धावस्कर एक वन साइडेड गेम थी और वन साइडेड गेम होने की वजह से कार्तिकेय जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे दिल्ली के, उन्होंने ये मैच जीती थी। उसके बाद अदिति राव और मालविका बंसोड़ के बीच में हमने एक अच्छा मैच देखा। सोचा था कि मालविका बंसोड़ और अदिति राव के बीच में बहुत बढ़िया गेम हो जाएगी, पर ये भी थोड़ी वन साइडेड गेम हो चुकी थी और इसमें मालविका अपना एक्सपीरियंस जो है वो उसके हिसाब से वो खेल नहीं पाई। अदिति राव ने इस खेल को जीता और अभी आपने देखा कि सौरभ वर्मा और रघु एम के बीच में मध्य प्रदेश और कर्नाटक के दोनों खिलाड़ी थे और इन दोनों ने जिस तरह से अपना खेल दिखाया, उस खेल में मेरे ख्याल से ऑन द टोज बहुत सारे लोग खड़े थे। और पहला जो सौरभ वर्मा और रघु एम के बीच में जो आपने खेल देखा था, उस खेल में आपने 21-16 और 22-20 से सौरभ वर्मा ने जीत हासिल की थी। इसी के साथ अभी हमारा सीधा प्रसारण यहीं पे रोक रहे हैं और इस सीधे प्रसारण में फिर से हम जुड़ेंगे 5 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। $90 करोड़ आज आपके